को वो ये पूछा जाता है कि इनकी इतनी खूबसूरत स्किन कैसे है, क्या ये ग्लो एंड लवली का कमाल है या वो हल्दी पानी जो इनकी मम्मी ने इनको आदत डाली है कि जब भी घर में आओ तो सीधे हल्दी पानी पियो। ये ब्रांड का नाम ये ले रही हैं, मैं नहीं। तो लेट मी क्लैरिफाई दिस, मैंने नहीं बोला ये सब बोलने के लिए। ऑफ कोर्स मतलब हिमाचल से हूँ, तो अगर पूरा थैंक यू इसका श्रेय मेरे माता पिता को जाता है, वो पेरेंटेज के लिए। बाकी थोड़ी बहुत आपको ऑफ कोर्स केयर तो करनी पड़ती है। हल्दी पानी सिर्फ एक किसी ने कहा नहीं था, सिर्फ मुझे ऐसा लगा कि खासकर जब हिमाचल में हम लोग वहाँ ग्रो कर रहे हैं अपने अपने फार्म पर नेचुरल फार्मिंग के ज़रिए, और अच्छा लगता है थोड़ा। सो अगर वो भी कहीं ना कहीं उसका भी श्रेय है तो आई थिंक इट्स गुड। नेचुरल फार्मिंग पे भी मैं बात करूँगी यामी से। यामी का मैंने देखा है कि अगर आप यामी से सिर्फ खूबसूरती की बातें करें, गोरे रंग की बातें करें, तो ये बहुत अच्छा रिएक्ट नहीं करती, मतलब कुछ नाराज सी हो जाती हैं। इसीलिए मैंने कहा ब्यूटी विद ब्रेन्स। महिलाओं को सिर्फ उनके गोरे रंग से जोड़ना, उनकी खूबसूरती से जोड़ना, इस पर यामी का क्या व्यू है? नहीं, मुझे लगता है अब वक्त बदल गया है, ज़माना बदल गया है। जब मैंने भी करियर में अपनी शुरुआत की थी इस इंडस्ट्री में, हर एक आदमी, हर एक जो भी आप अपनी जब जर्नी शुरू करते हैं, एक एक्सपीरियंस के बाद, एक टाइम के बाद आपकी भी थिंकिंग, आपकी भी चीज़ें बहुत इवॉल्व होती हैं, आप भी समझते हैं, आप खुद भी बहुत अवेयर हो रहे हैं। क्योंकि हम पब्लिक फिगर्स हैं, इसलिए लगता है कि अच्छा आपको सब कुछ पता होना चाहिए, आपके परफेक्ट आंसर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है, सब इंसान है, हम सब ग्रो करते हैं। द होल आइडिया इज़ टू इवॉल्व। और जहाँ तक कि आपके सवाल की बात है, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कि आजकल खासकर जिस तरह की अवेयरनेस में देख रही हूँ, चाहे सोशल मीडिया पे हो, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ पर जिन लोगों के पास माइक नहीं है, वहाँ तक ये बात ज़रूर जाए कि बिल्कुल आपकी क्षमता, आपकी काबिलियत पर आपकी पहचान है और किसी रंग रूप से नहीं। बिल्कुल। और एक दौर बॉलीवुड में हुआ करता था यामी जब खूबसूरती के बल पर, मतलब हीरोइन मतलब एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड खूबसूरती, फिगर, सब कुछ। लेकिन अब मुझे लगता है कि एक बोल्ड इमेज, एक स्मार्ट इमेज, एक स्ट्रेंथ के ऊपर फीमेल रोल्स मिलने लगे हैं। आपने अपनी फिल्म का भी नाम जो है वो मैंने ले दिया है। तो क्या अब ऐसा लग रहा है कि ये परिवर्तन है बॉलीवुड में? पहली बात, सबसे बड़ा परिवर्तन मुझे लगता है बॉलीवुड शब्द से है। अगर आप किसी भी, मुझे लगता है एक्टर से पूछेंगे या एक्टर या डायरेक्टर या जो भी सिनेमा से वाकिफ़ हैं, जिनका काम है, वो सब बोलेंगे कि ये शब्द अब अच्छा नहीं लगता सुनने में, और आज ही नहीं, कभी भी नहीं अच्छा लगा सुनने में। हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बोल लीजिए या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, आई थिंक इज़ अ बेटर वर्ड। और जितना ज़्यादा ऑब्जेक्शन नोटेड जी, आई थिंक जितना ज़्यादा मीडिया भी खासकर अगर ये थोड़ा परिवर्तन ले आए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए बोल रही नोटेड जी। दूसरी बात, आपके बात का सवाल, नहीं, अगर ऐसा होता तो मेरी पहली फिल्म विकी डोने नहीं होती। मैंने तो अपने करियर की शुरुआत ही इस तरह की फिल्म से की थी जिसमें सब्सटेंस था एंड एट द सेम टाइम इंटेंशन था कि ऑडियंस तक पहुँचे। मेरी मम्मी के गोल्डन वर्ड्स है, ऑडियंस हमेशा खुश रहनी चाहिए, ऑडियंस खुश होनी चाहिए, आप कोई भी काम करें। पर बात अपॉर्चुनिटीज़ की होती है, बात है कि क्या आपको वैसी ही अपॉर्चुनिटीज़ आगे भी मिल रही हैं कि नहीं। तो थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, हर एक का अपना एक्सपीरियंस होता है। मुझे लगा कि उस वक्त सडनली जब आपकी पहली फिल्म उसको इतना सक्सेस मिले, आपके साथ टीम्स जुड़ जाती हैं, लोग जुड़ जाते हैं, आप एक इंडस्ट्री में ऐसी इंडस्ट्री में आए जहाँ पर आपको कुछ नहीं पता, आपके सिर्फ मन में बहुत सारी नोशंस हैं, बट एक्चुअली आपको कुछ नहीं पता। आज भी मैं बोल सकती हूँ कि अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी समझ रही हूँ। उसमें अपने आप को पाना, अपने आप को ही समझना कि आप किस तरह की फिल्में करना चाहते हैं, किस तरह की फिल्मों से जुड़ना चाहते हैं, आप ऑडियंस तक आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना और खुद की समझ रखना, उस थोड़ा तालमेल में वक्त लगता है। तो मुझे लगता है 2019 से मेरे लिए पर्सनली वो वक्त दोबारा मुड़कर आया, क्योंकि यही इंडस्ट्री एक बार मौका दोबारा ज़रूर देती है। बिल्कुल। मेरा सवाल अगला ये है कि एड फिल्म्स में काम करना, उसके बाद टीवी स्क्रीन पर आना, टीवी सीरियल्स में आना, उसके बाद 70 mm के पर्दे पर आना, ये सफ़र आसान नहीं होता है। क्योंकि एक परसेप्शन है पूरे इंडस्ट्री में, या कहिए कि पूरे देश में, कि जो टीवी पे काम कर रहा है वो कमतर है, जो फिल्मों में 70 mm पे काम कर रहा है वो बड़ा कलाकार है। तो क्या इस झूठ को, इस मिथ को तोड़ने के लिए यामी को बहुत संघर्ष करना पड़ा, या ये सब होता चला गया फ्लो में? नहीं, संघर्ष तो बिल्कुल है, और संघर्ष आई एम श्योर सबकी ही फील्ड में होता है, आपकी फील्ड में है, सबकी फील्ड में है। बस फ़र्क ये है कि हम
हम जो भी हमारा काम है, एक पलक भी झपकते हैं तो वो सब कैमरा पे आता है और उसके ऊपर बहुत वी आर कॉन्स्टेंटली अंडर स्क्रूटनी. बट एज फार एज द इंडस्ट्री इज़ कंसर्न, आई थिंक वो जो परिवर्तन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो डेफिनेटली वो कॉन्स्टेंटली वो चेंज आई थिंक मुझे लगता है हो रहा है. और होना भी चाहिए. जिस तरह की फिल्में मुझे लगता है पहले बनती थी या जो आ रही थी, आई थिंक आज के टाइम में मुझे नहीं पर्सनली मेरी जर्नी टीवी में बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रही थी. बहुत मुझे लगता है मेरा पहला शो तो सिर्फ 3 महीने चला था, दूसरा 2 महीने और तीसरा कुछ 8 महीने. तो बहुत इनकरेजिंग नहीं रहा था. बट आई अंडरस्टैंड वाई. और मुझे उसी दौरान समझ में आ गया था कि मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ आगे बढ़ना है. और आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि वो कुछ ख़राब है. मैं आपको आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ पंकज कपूर जी, जिनके साथ मैंने अभी लॉस्ट में हाल ही में काम किया. उन्होंने टीवी किया और उन्होंने टीवी उस दौर पे किया कि आज भी अगर हम उन शोज़ के नाम ले बात करें या सोशल मीडिया पे ढूंढें तो वो कमाल के शोज़ थे. वो कमाल की जो उसे बोलते राइटिंग थी. तो आई थिंक फ़र्क सिर्फ मुझे लगता है वहाँ पर था. तो मुझे लगा मुझे कुछ और करना है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतना नहीं था, मेरा नाम इतना नहीं हुआ था टेलीविज़न इंडस्ट्री में. और मुझे लगता है सबसे वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट डिफरेंसेस कि एक आप फिल्म एक्टर हैं तो लोग आपको आपके नाम से जानते हैं, और अगर आप टेलीविज़न पे काम कर रहे हैं आपके किरदार से जानते हैं. बहुत बड़ी बात आपने कही. लेकिन अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगी. और उरी वर्सेस 10वीं, उरी में आपने एक आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी, 10वीं में आपने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी. तो अगर मैं दोनों में वर्सेस करूं तो आपके दिल के करीब कौन सा रोल है और आपको क्या पहन के ज़्यादा मज़ा आया? नहीं, वर्सेस तो हो नहीं सकता. ये इट्स ऑलमोस्ट लाइक दोनों ही एक आपके शरीर के अंग हैं, तो वर्सेस तो हो ही नहीं सकता. दोनों का साथ में चलना और वो बहुत ज़रूरी है. उरी में ऑफ कोर्स आई वाज एन एजेंट, NSA एजेंट, और उसमें वही बात है, उसमें यूनिफॉर्म आपकी एटीट्यूड में है, आपके सोच में है, वर्सेस व्हाट यू सीइंग ऑन स्क्रीन. 10वीं में ऑफ कोर्स मैं एक IPS ऑफिसर थी और मेरा तो काम है बस किरदारों पर काम करना, अलग अलग कहानियाँ आगे लाना. बाकी जिसको बोलते हैं कि सब कुछ ऑडियंस है, ऑडियंस ही हमें बनाती है, ऑडियंस ही डिसाइड करती है कि अच्छा ये एक्टर को या ये फिल्म को हमने पसंद किया या नहीं किया. एंड लकीली दोनों ही फिल्म, भले ही ऑफ कोर्स उरी वाज अ मैसिव हिट, बड़े पर्दे पर आई, 10वीं OTT पर आई, पर हम इस चीज़ में फ़र्क नहीं कर सकते कि अच्छा कौन ज़्यादा बेहतर था. दोनों ही मुझे लगता है बहुत अच्छे थे. मैं थोड़ी सी इस मामले में बहुत जेनरस हूँ खुद को लेकर. अब होना भी चाहिए. और उरी फिल्म का जिक्र आया है तो उरी फिल्म के डायरेक्टर फिल्म डायरेक्ट करते करते यामी को ही डायरेक्ट कर गए. तो अब ये बताइए कि घर में कौन किसे डायरेक्ट कर रहा है? नहीं, घर में कौन पूछ रहा है हाउ इज़ द जोश? नहीं, हम एक्चुअली उरी की फिल्म शूटिंग के बाद जस्ट प्रमोशन के टाइम टेक्निकली अगर मैं बोलूँ हमारी बात शुरू हुई थी, क्योंकि जब इंटरव्यूज़ होते हैं लंबे लंबे सवाल, लंबे लंबे जवाब, और जैसे अगर स्पेशली आप 5 लोग हैं, जब तक आपकी बारी आएगी तो आप दूसरे का आंसर सुन रहे हैं. उन्हीं दौरान थोड़ा सा एक जिससे बोलते हैं एक फ्रेंडशिप शुरू हुई, एक दोस्ती शुरू हुई कि अच्छा आप भी यहाँ से हैं या आप भी इस तरह की सोच रखती हैं. that's how it started. घर पे तो नहीं, ऐसा मेरी कुछ चलती नहीं है. मेरी नहीं, जैसे मैंने कहा दोनों ही पहिए हैं उस गाड़ी के, दोनों का ही स्थिर रूप से एक साथ चलना बहुत ज़रूरी है. अच्छा, तो मतलब कोई किसी को डायरेक्ट नहीं करते, दोनों अपने अपनी गति से सामंजस्य बना रहे हैं. आपकी 10वीं क्योंकि OTT पे रिलीज़ हुई और आपने अभी जिक्र किया, उरी जो थी वो 70 mm के पर्दे पर आई थी. मेरा सवाल आपसे ये है कि OTT पर फिल्म आना ये माना जाता था पहले, अब तो नहीं. ये है कि मतलब उतना नहीं है, जब तक 70 mm का पर्दा ना हो, हाथ में पॉपकॉर्न ना हो, लार्जर देन लाइफ फील ना हो, तब तक फिल्म नहीं लगेगी. तो जब 10वीं OTT पे आने जा रही थी तो क्या ये चिंता, ये डर आपको था मन में? आपको लग रहा था कि यार ये तो थिएटर में ही रिलीज़ होनी चाहिए थी? देखिए, जो पहला प्यार जिसे बोलते हैं या फर्स्ट प्रेफरेंस विल ऑलवेज बी थिएटर्स. फिल्में बनी ही इसलिए गई थी कि आप ऐसे माध्यम में कुछ ऐसा देख रहे हैं जिसको बोलते हैं मैजिक ऑफ सिनेमा, कि जहाँ पे आप कट ऑफ है कि बाहरी दुनिया से, अंधेरा है, सामने स्क्रीन है, और बस आपको जो भी वो डायरेक्टर का विजन है, जो भी उनकी क्रिएशन है, उसमें आप खो गए हैं. फिल्में बनी ही इसके लिए गई थी. और मैं 90s किड,
मुझे आज भी याद है, आई थिंक आज वॉज द लास्ट जनरेशन जिन्होंने वो सिंगल स्क्रीन का मज़ा लिया है, जहाँ पर सब कुछ गरम गरम पॉपकॉर्न और फैंस होते थे, मुझे याद है, और सब द जॉय ऑफ एक्चुअली वॉचिंग अ फिल्म टुगेदर। आजकल एक्चुअली अगर आप स्क्रीन्स में भी जाएँ, थिएटर्स में, वहाँ पे भी सेलफोन्स की लाइट आपको दिख जाती है, कितने कितने लोग वो जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहे हैं अभी भी, बिकॉज द अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है लोगों का। बट मैंने हमेशा देखा है कि आपकी डिज़ायर्स अलग, बट वक्त की नज़ाकत है कि आपको इम्प्रोवाइज़ करना है। मेरी पिछली 5 रिलीजेज़ OTT पे आई हैं और 5 ने ही अच्छा किया है, और OTT पे भी पैरामीटर्स होते हैं, आपको पता चलता है आपकी फिल्म की कितनी व्यूअरशिप है, व्यूअरशिप के साथ साथ पसंद आ रही है कि नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्विच ऑन किया, अच्छा है, मज़ा नहीं आया और आगे बढ़ते हैं। तो हम एक्टर्स हैं, हमारा काम है कि द शो मस्ट गो ऑन, और चाहे OTT हो, थिएटर्स हो, हम चाहते हैं ऑडियंस, एज आई सेड, खुश रहे। हर एक फिल्म, अगर अच्छी फिल्म है, वो अपनी ऑडियंस ढूंढ ही लेगी कहीं भी। ठीक है, विमेन सेंट्रिक फिल्म्स की मैं बात करना चाहूँगी, चाहे गंगूबाई में आलिया भट्ट हो, चाहे गहराइया में दीपिका पादुकोण हो, चाहे लॉस्ट में आप हो। क्या बॉलीवुड बदला है? यामी को ऐसा लग रहा है, या अब लग रहा है कि अभी और बदलने की ज़रूरत है? इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बदल रही है, ठीक है, भारतीय सिनेमा जगत जी। और ये जो शब्द है ना, वुमेन सेंट्रिक, क्योंकि ऑफ कोर्स अगेन हम इंटरव्यूज़ करते हैं, हम पढ़ते हैं, ये शब्द भी मुझे लगता है बहुत जल्दी जाने वाला है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ ये क्यों शब्द कॉइन हुआ था, क्योंकि मैथ अलग था, इकोनॉमिक्स अलग था, पहले ज़्यादा से ज़्यादा मेल डोमिनेटेड या मेल कैरेक्टर डोमिनेटेड फिल्में आती थी। पर अगर आप देखें, ऑडियंस को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कैरेक्टर से फ़र्क पड़ता है। अब फीमेल इज प्लेइंग, मेल इज प्लेइंग, दैट डजंट मैटर, इट्स द कैरेक्टर एंड द स्टोरी जो मैटर करता है। और ये देखिए, कोई भी जो चेंज आता है एक रात में तो नहीं होता है, जनरेशन लगती है, हर जनरेशन अपने साथ एक चेंज लेकर आती है। मदर इंडिया उस ज़माने में भी बनी है, जिस ज़माने में मुझे नहीं लगता ये कॉन्वर्सेशंस होती थी। स्मिता पाटिल जी जैसी एक्ट्रेस उस टाइम पे भी रही हैं, मैं उनकी इंटरव्यूज़ आज भी देखती हूँ, आई विश शी वॉज अलाइव, कि कितनी अवेयरनेस थी कि औरतों का, जो फीमेल एक्टर्स हैं, उनका आप किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं सिनेमा में। और मुझे लगता है इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं, जिस मोड़ पर, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, और डेफिनेटली इंडस्ट्री इवॉल्व कर रही है। बेहतर किरदार लिखे जाएंगे, बेहतर राइटिंग होगी, तो ऑफ कोर्स बेहतर परफॉर्मेंसेस भी आएंगे, और ऑडियंस को अच्छी फिल्म से ही मतलब है, उनको और किसी चीज़ से मतलब नहीं। फिल्म से निकलकर यामी आपके ऊपर आती हूँ। आप जो पार्टीज़ होती हैं आपके सिनेमा जगत में, अब क्योंकि आपने बॉलीवुड पे ऑब्जेक्शन कर दिया तो बॉलीवुड नहीं बोलूँगी, भारतीय सिनेमा जगत में जो पार्टियाँ होती हैं उसमें यामी गौतम नहीं जाती हैं, ज़्यादातर घर में रहना पसंद करती हैं। इसकी क्या वजह है? क्या कंट्रोवर्सी से यामी गौतम बचना चाहती हैं, या वहाँ जो राजनीति होती है उस सिनेमा जगत में उससे बचना चाहती हैं, जो ग्रुपिज़म है? क्या वजह है, क्यों नहीं जाती हैं? पार्टीज़ में जाना तो सबको पसंद होता है ज़्यादातर। नहीं, मुझे कभी भी पसंद नहीं था, और मैं हमेशा से, वो बोलते हैं ना कि आप अपने घर, अपने स्कूल गए हैं या कॉलेज गए हैं, यूनिवर्सिटी गए हैं, काम ख़त्म किया और वापस घर आ गए, मैं उन बच्चों में से थी। और मुझे लगता है कि आप लाइफ में कितनी भी आगे चले जाएं, आप बढ़ रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, पर जो आपकी रियल एक पर्सनालिटी है, सक्सेस वही है जो आप हासिल करें अपने दम पर, अपने बलबूते पर, अपने सिद्धांतों पर, जो आपको खुशी दे उसके ज़रिए। मैन ऑफ कोर्स, और पार्टी जहाँ तक की बात की जाए, वो हर क्षेत्र में, हर प्रोफेशन में भी होती हैं, जैसे मैंने कहा आपकी भी। बट यहाँ मेरी जो फील्ड है, यहाँ पे 2+2 4 नहीं है। बहुत आपकी लाइफ का डिसीजन बाकी किसी और के हाथ में है। और मैं क्योंकि इस तरह की कभी नहीं रही हूँ कि मैं किसी कैंप में, या मुझे किसी सर्कल में दिखना है तभी। कैंप्स हैं बॉलीवुड, मतलब सिनेमा जगत में कैंप्स हैं? आप मुझे पूछ रहे हैं? हाँ, आप मुझे पूछ रहे हैं। नहीं, आपने कहा मुझे कैंप्स में जाना पसंद नहीं है, मैं किसी कैंप से ताल्लुक नहीं रखना चाहती, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ, क्योंकि आपने वो शब्द इस्तेमाल किया, और आई डोंट वांट टू गिव इट एनी नेम और एनी वर्ड, इट्स फाइन। जैसे मैंने कहा कि आप स्कूल में भी जाएं, हर एक का अपना ग्रुप होता है, ये हमारा ग्रुप है, ये उनका ग्रुप है, मेरा भी था। आप राजनीति में आ जाइए। अच्छा, क्यों? आप अच्छी नेता बनेंगी। अच्छा, कर्म। मैं रोज नेताओं के इंटरव्यू करती हूँ, कर्म की बात कर मैं रोज नेताओं के इंटरव्यू करती हूँ, इतने पॉलिश्ड तरीके से वही बात को निकाल के ले जाते हैं, तो मैं इसलिए कह रही हूँ। मैं एक्टर ही ठीक हूँ, बट हाँ, मुझे पसंद नहीं। और जैसे मैंने कहा, आज ये वक्त है, अगर कोई है भी, कोई ग्रुप्स हैं जो भी आप बात कर रही हैं, पर मुझ जैसे लोग भी
एग्जिस्ट कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। मैं इसलिए ये बात बोलती हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे अपनी थैंक यू अपनी बढ़ाई करनी है, अपने बारे में कुछ एक्सप्रेस करना है। मैं इसलिए बात करती हूँ ताकि अगर कोई ऐसा देख रहा है, आप ऑफ कोर्स आपका प्लेटफॉर्म, आपका ये सेगमेंट बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत लड़के लड़कियाँ देख रहे हैं जो पूछते भी हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या ये ज़रूरी है, क्या वो ज़रूरी है नेटवर्किंग। नहीं, अगर आपके दिल से किसी चीज़ के लिए आवाज़ ना आए, प्लीज़ मत करिए। अपने हुनर पे काम कीजिए, अपने टैलेंट पे काम कीजिए, अपने फैमिली से जुड़ी रहिए, क्योंकि एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और एक वक्त ज़रूर आता है जहाँ पर, जैसे मैंने कहा, इंडस्ट्री भी और कहीं ना कहीं एक सुपर पावर भी है जो जिनकी एक ब्लेसिंग ज़रूर एक वक्त पर आपको लगता है कि आजकल बड़े बड़े वेन्यूज़ और बड़े बड़े मेन्यूज़ के साथ शादी हो रही है, लेकिन यामी ने एक ऐसी शादी करी जो ना बड़ा वेन्यू था, ना बड़ा मेन्यू था, ना डिज़ाइनर लहंगा था। क्या वजह है? एग्जैक्टली वही वजह जो मैंने कहा। शादी हमारे यहाँ कहते हैं जीवन, मृत्यु और शादी 3 ऐसे इंसिडेंट्स हैं लाइफ में, या ये ऐसे जिसको बोलते हैं कि इम्पॉर्टेंट, बहुत 3 ऐसे ये इम्पॉर्टेंट, आप इंस्टीट्यूट मान लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, बट दे आर इम्पॉर्टेंट। आपका जीवन, शादी एंड मृत्यु, ऐसे मुझे कहा गया। जब हम मैरिज सर्टिफिकेट लेने भी जा रहे थे तब भी बोला गया था। शादी क्योंकि इतना ख़ास दिन है, तो वो आप क्या सोच रखते हैं या आपकी फैमिली क्या सोच रखती हैं, वो उसका एक्सप्रेशन होना चाहिए, वर्सेस कि मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है लोगों की या मुझे किसी को प्रूव करना है। और मैं मानती हूँ जो आपको खुशी दे, आपको बड़ी शादी किसी को खुशी दे रही है, आप बड़ी शादी कीजिए। हमारी खुशी, मेरी और आदित्य की पर्सनली ये थी कि हमें, और दिस इज़ अगेन अ कोइंसिडेंस, कि बचपन से ऑफ कोर्स हम लोग शादी अटेंड करते आए हैं, जो वेस्टेज होती है, जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या कई बार लड़कियों वालों में प्रेशर होता है कि अच्छा ऐसा होना चाहिए, इट हैज़ टू बी, आपको इट हैज़ टू बी डन इन अ सर्टन वे, इतना खर्चा होना चाहिए, आपको ऐसे ही लगना है। ऐसा नहीं है। आपने अपनी माँ की साड़ी पहनी? मैंने अपनी मम्मी की साड़ी पहनी, और मैंने शुरू से सोचा था कि जब भी शादी हो, हाँ, ये नहीं सोचा था कि मेकअप में इसमें आपने अपनी मम्मी को क्रेडिट दिया कि नहीं? उन्होंने बहुत संभाल के उस साड़ी को रखा कि आप पहन पाई। बिल्कुल, मम्मी को क्रेडिट ही क्रेडिट है, मम्मी को क्रेडिट नहीं तो किसका? मम्मी को तो बहुत चीज़ों का क्रेडिट है। अच्छा, ये कहा जाता है कि शादी के बाद, ऐसा हमारा समाज भी ऐसा ही है कि शादी के बाद फिल्मी करियर जो है उस पर थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है, व्यूअर बहुत देखना नहीं चाहता है। तो क्या यामी को ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि ऑफर्स कम आने लगे हैं, या लग रहा है कि नहीं अब तो उड़ने का वक्त है? नहीं, मुझे लगता है मैंने जितना काम पिछले शादी को तो खैर अभी 1.5 साल हुआ है, पर 3 सालों में जितना काम किया उतना विकी डोनर के बाद मुझे नहीं मिला। तो एक वक्त आई एम श्योर ज़रूर था जहाँ पर ये सिर्फ धारणा नहीं थी, पर ये होता भी था। हमने इंटरव्यू सुने हैं बड़ी बड़ी लेजेंडरी एक्ट्रेसेस से, जहाँ पे उन्होंने कहा अरे हम पेड थे किसी के ऑपोजिट, जैसे ही शादी अगले दिन आपको उनकी अब मम्मी का रोल करना है। वो पर वक्त और था, पर आज मुझे लगता है मैं ही नहीं बट जितनी भी एक्ट्रेसेस, चाहे मेरी कंटेम्प्रेरीज हों या सीनियर्स हों, वेदर आपकी पर्सनल लाइफ ये है और आप उसके प्रोफेशनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि मेन क्या है, ऑडियंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट वो ज़्यादा खुश होंगे कि प्लीज़ शादी, हाँ किसी के जीवन में खुशी हो रही है, शादी हो रही है या बच्चे हो रहे हैं, ये हमारा काम है, वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ। समय मेरे पास इतना ही है, बस आखिरी सवाल छोटा सा, क्योंकि मैंने सुना है कि आप मुंबई छोड़कर हिमाचल प्रदेश जाना चाहती हैं, वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहती हैं, तो हम फैंस का क्या होगा फिर? नहीं, मुझे लगता है हम दोनों ही काम कर सकते हैं, और इसमें अगेन मैं श्रेय अपनी माता जी को दूंगी, अपनी मम्मी को दूंगी। मम्मी पापा मेरी फैमिली, हिमाचल में एक छोटा सा हमारा घर है जहाँ हमारी शादी भी हुई थी वहीं पर, और हम नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं वहाँ पर। जहाँ नेचुरल फार्मिंग मतलब जो पुराने ज़माने में जो फार्मिंग करते थे, जहाँ पे कोई पेस्टिसाइड इस तरह की कोई हार्मफुल पदार्थ यूज़ नहीं कर रहे, और हम जो उगाएंगे या जो कर रहे हैं वो बहुत जल्दी उसके बारे में बात करेंगे। तो फिल्में भी हो सकती हैं साथ में, और वो काम भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद यामी, आपने ABP न्यूज़ के लिए वक्त निकाला, इस मंच पर आप आई, आइडियाज़ ऑफ इंडिया के मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू वेरी मच शोभना, थैंक यू यामी, आपकी ऑनेस्टी, आपकी सादगी हमेशा दिलों को छूती है। We wish you all the success in the world. Please stay with us on stage as I invite Rajiv Dubey, Head Media, Dabur India Limited, to present you with a token of our appreciation. It's been such a refreshingly honest and wonderful conversation. Thank you, Yami.
A big round of applause, please, ladies and gentlemen, for a beautiful actress whose simplicity is endearing. Thank you, Shobna ji. Thank you very much. Just like there is nothing like Indian movies, there's nothing like an Indian general election as well, isn't it? And we're going to talk about that very, very shortly. But just as the stage is being set up for our next mega session, we should take a moment here to thank all our partners and sponsors. Ladies and gentlemen, Ideas of India is co-presented by Dabur Vedic Tea, co-powered by Dr. Ortho, Gallant Advanced TMT Sarya and Rajesh Masale. Driving partner Maruti Suzuki, technology partner Panasonic, gold partner Senco Gold and Diamonds in partnership with Vico Laboratories, Jungli Rummy, Tata Capital, Go Gas, Clean and Dry, MMRDA and Citco, and our knowledge partner is Sharda University. So we'll just be starting our session on the 2024 general elections. Just give a moment for the stage to be set up for that. Guests are here, so I think we have the green signal to go ahead. So would you all agree that there's nothing like a general election in India? Looking for a show of hands here. Who thinks that there's absolutely nothing like a general election in India? Can we hear a big yes? Okay, couple of yeses. I think people are just observing our guests sitting in. पर ये कोई हैरानी की बात नहीं है दोस्तों that 2024 का जो घमासान होने वाला है उसकी शुरुआत काफ़ी महीनों से ऑलरेडी हो चुकी है। कुछ राजनीतिक पंडितों का कहना है कि मोदी सरकार के लिए कोई वास्तविक चुनौती नहीं है क्योंकि जो विपक्ष है वो खंडित है। ऑफ कोर्स जो विपक्षी दल हैं वो सहमत नहीं है इस बात से और भाजपा का सामना करने के लिए एक गठबंधन करने के बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। For this session of Ideas of India 2023, our focus is on what's going to be an unprecedented political battle, the 2024 general elections. So with a lot of love, please welcome our speakers for this discussion. First up, put your hands together for Priyanka Chaturvedi, Member of Parliament, Shiv Sena, Uddhav Bala Sahab Thackeray. Welcome Priyanka ji. अब स्वागत करना चाहूंगी कविता के, Member of the Legislative Council, Kama Reddy and Nizamabad, Bharat Rashtra Samiti. A warm welcome, ma'am. Also, a big welcome to Raghav Chadda, Member of Parliament and National Spokesperson, Aam Aadmi Party. And kindly welcome on stage, Poonam Mahajan, Member of Parliament, the Bharatiya Janata Party. A big welcome to all of you and looking forward to this session. Please welcome on stage the one and only Veer Sanghvi to chair this discussion. Ladies and gentlemen, good evening. This is our debate. As you see, we have three very articulate politicians, and we're going to discuss, does the opposition really have a chance coming up to the next general election, or is it a done deal? I suspect one person on the panel will say it's a done deal, but there are three people here who will disagree. So I'm going to ask them to say, if it's not a done deal, why do you think that? I mean, what possible reason would anyone have to vote for you? So they're going to try and persuade you. We're going to try and make this vaguely formal,
and not just a TV debate. So of course, everything degenerates into a TV debate by the end. So what we will do is every speaker will speak for 5 minutes at the lectern, will tell us what their point of view is, and after they've all spoken for 5 minutes, then we'll make it a discussion. Before we actually have the debate, I thought I'd get your views before and after. How many of you think the opposition has a chance in the next general election? Put your hands up. Not so bad, huh? I thought we watch us. All right, how many of you think it's a done deal for the BJP? Okay, evenly divided. Either you people are genuinely divided or you're very bored and you're not answering. We'll figure that out. Let's start with the first. Yeah. No, they're not putting their hands up. You know? Let's start with the first thing. Let's start with the assumption that the opposition does have a chance. There to tell us why she thinks the opposition has a chance, may I invite Priyanka Chaturvedi. You have to go there. Poonam, I'll put you last after the question. Hello and good evening. And I'd like to begin with saying that no, it is not a done deal that the Bharatiya Janata Party government would be coming back to power in 2024. And I have my reasons to say so. Today, the opposition is speaking up for the people of this country. We are talking about the farmers, we are talking about housewives, we are talking about working women, we are talking about cost of living, we are talking about unemployment, we are talking about the youth, we are talking about crony capitalism. And what is the Bharatiya Janata Party talking about? Bharatiya Janata Party is talking about how it keeps adding to its election tools these arsenals which are known as the central agencies. They're talking about how do you make ECI the entirely compromised institution of India? They're talking about ED, how do you make it an extended department of the Bharatiya Janata Party? You're talking about the IT, you're talking about the CBI, and how they have become a toolkit for the Bharatiya Janata Party to keep consolidating their voter base and at the same time trying to do away with India's opposition altogether. But India's opposition is determined that we are not speaking for ourselves. We are not speaking only about how to come back to power. We are speaking about the entire idea. Now we are speaking at a conference called Ideas of India. The idea of India. What is the idea of India? But he doesn't really practice it. He speaks about Vasudhaiva Kutumbakam. If you are speaking about Vasudhaiva Kutumbakam, how can you have differences between those who are strong and those who are weak? How can you have differences on the basis of caste and religious divides? How can you have hatred becoming a tool of consolidating your votes? And if you're talking about my idea of India is what democratic institutions and constitution is about. What did Dr. Baba Sahib Ambedkar strive for? He strove for a country which is equal for all. And we will continue speaking up for it as much as the Bharatiya Janata Party might want to thwart all these institutions, might want to undermine these institutions. And if you look at every election going state now, we are heading towards a scenario where people are going to be questioning the BJP and all the election promises that they had made way back in 2014. And no, whataboutery won't work. No, they cannot say, oh, this is what Congress used to do. Oh, this is what y'all used to do. Because y'all have come back on the promise of changing all that the Congress used to do, and you're committed to make a more vibrant India, a more inclusive India, a more economically empowered India, and you're totally silent about this. So we will continue fighting our fight because we know this is a good fight, and we will continue to speak up for the people of this country and for democratic principles. And considering I'm from the Shiv Sena, now, I do not need to even stress I'm from the Uddhav Bala Sahib Thackeray Shiv Sena because people only know Shiv Sena as that of the Thackerays. And as much as you might bring in an ECI to change that status quo, in the minds of the people and in the minds of Maharashtra, we will continue to be the Shiv Sena which speaks for the people of Maharashtra. Thank you so much. And Thank you, Priyanka Chaturvedi. A small miracle. The first politician I know who finished in time without having to be reminded. Okay. Second person giving the opposition case, Raghav Chadda. Can I ask you to speak? Is 2024 a done deal for the BJP? The answer to my mind is no.
But before I come to the mathematics of it, permit me to say that today a new brand and a new vocabulary of politics in India is required to challenge the mighty BJP. A new idea of politics, a new messenger of the political vocabulary is required. And I think that is something that the Aam Aadmi Party does certainly bring to the table. Having said that, let me first rewind back to the election of 1977 before we speak more and more about the upcoming 2024 general election. In the year 1977, under the concept, under the formula of one candidate against one candidate of the BJP, the entire society at large, and not just political parties, got together and they defeated the mighty Congress. Post the 1971 India-Pakistan war, liberation of Bangladesh, the goodwill and the popularity of Mrs. Indira Gandhi was at its peak. But then, of course, due to rampant corruption, unemployment, inflation, and an authoritarian regime, that popularity and goodwill melted, and it melted faster than an ice cream on a hot summer day. As a result, the people got together to defeat the mighty Congress. No one had at that point in time thought that Mrs. Gandhi could be defeated. And Mrs. Gandhi was not only defeated at a pan-India level, but she also lost her own constituency, with Sanjay Gandhi also losing his own constituency, and the power of people winning that election. In that election, the combined opposition got 294 seats. And out of those 294 seats out of 543, almost 200 seats were won by a victory margin of more than 25% of the votes. Not only that, the Congress, the mighty Congress in the year 1977, won only 154 seats. And out of those 154, roughly 115 seats came from the southern part of India. That's Tamil Nadu, Kerala, Andhra, etc. Because the Congress had a substantial presence in that belt. Now let's come to the BJP of 2024. If the opposition were to come together under the banner of one candidate versus one candidate of the BJP, or one election symbol versus one election symbol of the BJP, not only can the BJP be defeated, the BJP can be defeated, and a more crushing defeat can be handed out to the BJP than was handed out to Mrs. Gandhi in the year 1977. It's also because Mrs. Gandhi's Congress may had a strong presence in southern India in the year 77. Today's BJP has no presence in southern India of the 2024. BJP has 0 seats in Tamil Nadu, BJP has 0 seats in Kerala, BJP has 0 seats in Andhra, and I think about 3 or 4 in Telangana. And therefore, I think the mighty BJP can be defeated. Not only this, BJP has lost 9 of its most formidable allies over the last 5 years. With the Shiromani Akali Dal in Punjab dumping the NDA, to Shiv Sena in Maharashtra dumping the NDA, to JDU Nitish Kumar dumping the NDA. I think the BJP stands weakened, and all right-thinking individuals, and not just political parties, I think people at large need to come together to defeat the BJP. But this will only happen if we have 3 things, which I call the 3 M's. The 3 M's that can defeat the BJP. 1, a new message. 2, a new messenger. And 3, a new model of governance. Thank you. Thank you, Raghav. That was a very compelling speech. And
I'm sure people are looking for a new messenger, though I note you didn't say who this messenger would be, but I can guess. All right, may I ask Kavita Rao to speak now? Good evening, everyone. Thank you, ABP, for having a very timely discussion and debate on one of the most important subjects, because this is a subject which will affect 140 crores of our Indians, and this will affect the future of India and the image of India internationally. So thank you so much for having a very timely and an apt debate. Now, I've heard my friends Priyanka and Raghav speaking about how BJP can be defeated. I want to once again agree with them, reiterate that not BJP can be defeated, but BJP must be defeated. Why BJP must be defeated? Two things. We had, as Indians, collectively given power to the current government, believing in them that what Congress could not do in so many years, BJP will come and do it, because BJP had promised multiple things. In the first time, 2014, when we gave them an opportunity with 282 seats, they had promised for a lot of things. One being bringing back the black money, which only increased but never come back. One is 2 crore job every year, which nobody has seen. 3, a proper policies and development model, and stopping the rupee from falling, which has never happened. Well, Indians being Indians, all of us forgave. Mr. Modi, we said, chalo 5 साल के और 5 साल ले लीजिए, लेकिन कुछ तो बदलाव लाके दिखाइए. From 282, we reinforced Mr. Modi's strength, BJP's strength. We gave them 303 seats in the next election. But in the next 5 years, again, unfortunately, people gave them 303, but all BJP gave us is 3 black laws, which had ended up being responsible for 750 farmers dying in Singh border. They were anti-farmers, no jobs again, rupee value still falling, zero COVID management, and the list goes on and on. Now here the point is, if a government gets 10 years of chance and doesn't perform, should we not root them out? That is a fundamental question. 2, we are not asking for them to bring the moon down to the earth. We are just saying, if we can do Mangalyaan at the cheapest price in this world and be proud of it, why can't we give water to every household in this country? In Bombay, the financial capital of this country, we still get only 2 hours of water every single day in Bombay. Whichever friend I talk to, they tell us, 2 घंटे आता है, we don't know कब आता है. लेकिन in Hyderabad, within 7 to 8 years, we managed to make sure we gave water 24 hours in every small village of Telangana. If it can happen in Telangana, the same model can be replicated across the nation. And why isn't the current BJP government trying to do that? We're asking for basics, nothing else. Drinking water, irrigation water, jobs, that is all we are asking for. A new state like Telangana, if we can give away 2.5 lakh government jobs in 8 years, why is the central government sitting on 12 lakh vacancies in the government of India, not even giving a single notification? Forget about other notifications. In the premium institutes like IITs, IIMs, 28,000 jobs are vacant today, and the government doesn't want to fill up. But we want to become Vishwaguru. How are we going to become Vishwaguru without teaching our students what to do? So these are the fundamental questions: drinking water, irrigation water, jobs. These are the only 3 things that we are asking. In these 3 things, Modi government has failed utterly, so we must root them out of power. And yes, the opposition stands united today. We've multiple times conducted various rallies from BRS party, where Aam Aadmi party was present, where Shiv Sena was present, where various other parties like CPM were present. So today, opposition stands united, and we would like to continue this unity, and we seek the support of the people. Thank you so much. Thank you so much. That was a really powerful speech. Okay, Poonam, you now defend the government against all 3 of these people. But you can have longer than 5 minutes you want. It's just 1 against 3. Thank you very much. I don't think I need 5 minutes. I'll also follow the same rule as though it's 3:1. But I love hearing my friends and colleagues in Parliament talking about the mighty BJP, the mighty BJP, and the mighty BJP. I would like to tell them,
You are not the ones who call us mighty BJP. The BJP is mighty BJP because people of India trusted BJP and Honorable Narendra Modi to take idea of India forward. That's why it's mighty BJP. We don't have an arrogance of mighty BJP. We have that strength of mighty BJP. And that BJP is mighty because people of India trusted us in 2014. And as my dear friend Kavita told me, in 2019, with bigger numbers back in power and trusting. You know, idea of India, when we talk about India, the young India, we talk, when we look at world and India is the bright spot right now. I remember before 2014, the Fragile Five, and now in 2024, when we go for the election in just 10 years, from the Fragile Five before 2014 to the fifth largest economy of the world is India. That's the strength and changes we could see. Before 2014, we were discussing, ये scam है, वो scam है, coal है, ये है, plane है, जीजा जी है, नाना जी है, ताया जी है. But from 2014 to 2024, we just saw a clean government which says and does what is being told. Promises are not to be said, but they have to be fulfilled. And when you see BJP's agenda and BJP's promises, whatever you look forward to, I was just telling Mr. Sanghvi that everybody is talking about Congress and its history, but sadly, supposedly the biggest opposition party in Parliament is not present here. So I don't know how seriously even media is taking Congress right now. But the way we look forward to that, in 2014 to 2024, the idea was, I still remember one old now history came out from Gaurav ji, so I just realized that one biggest leader of Congress had said कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो लोगों तक 15 पैसे पहुंचते हैं. लेकिन I'm proud to say that direct benefit transfer in India, the kind of leapfrog we have seen in that 1 रुपया दिल्ली से निकलता है तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 1 रुपया जनता के हाथ में पहुंचता है. That strength and that idea of India we are talking about. In 2024, when we are looking forward to elections, what promises were made? Today you talk about from Fragile Five to the strength of fifth largest economy. When we talk about around the world, India is the bright spot, and around the world when you look at India, India is growing higher with 6%, and when you see recession all around the world, you see the bright spot of India because under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi. Everybody is saying the mighty BJP, हम सब साथ में मिलके लड़ेंगे और करेंगे. Now let's not get into their calculation of साथ में लड़ना और ये करना. We always see it, the circus on TV. But very importantly to my dear friends, I really want to tell them, मोदी नहीं तो और कौन? पहले आप तय कर लीजिए. उसको तय करने के लिए आपके पास भी 1 साल है. And I'm very happy to you to call mighty BJP. You are also mighty in some states and not mighty in some states. You actually very heftily lost in a lot of states. So when you talk about idea of India, I think you should also see how BJP has worked hard for past 40 years to take the idea of India forward. That's why the trust of people is in BJP. I don't want to get into a negative politics. Positively, when you look at youngsters, someone talked about jobs, someone talked about how we are taking things forward. I would like to say that India is the bright spot, which is taking, we have 100, unicorns in this country. And in past 8 years, we have the national education policy, which was only planned and discussed, but it's right now here for people to take the education and understanding forward. The India's youth, the Gen Z now, who's now seeing India in a different manner, is believing the idea of India. They believe that India is the bright spot, and my dream is connected to India's dream because there's one mighty leader by the support of mighty India is Prime Minister Narendra Modi. And that's how we are taking the idea of India forward. I don't want to say certain things about Mumbai, but I want to request, since yesterday I've been seeing leaders from different parties, Honorable Chief Minister of Delhi also had come, and my friend Priyanka ji is sitting here, and my friend Kavita ji is sitting here. It's not Bombay, and I think part of Shiv Sena should say it's Mumbai, and we have made this as Mumbai, and we call ourselves Mumbaikar. So first, idea of opposition should get together, what the emotions of every party and their ideology is together, then we'll look forward to, if not Modi, who? Until that time, I have full faith in people of India to not to stop the idea
जो बुलेट ट्रेन के विचार लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, वंदे भारत के नाम से हम हर गाँवों को और शहरों को जोड़ रहे हैं, छोटे छोटे एयरपोर्ट बना के लोगों तक पहुँच रहे हैं। ये आइडिया ऑफ इंडिया, लोगों के मोबाइल फ़ोन तक अपना पैसा आ रहा है, विधवा हो, युवा हो, हर किसी का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से उसकी ताकत उसको सीधे मिल रही है। वी वॉन्ट टू टेक दैट करप्शन फ्री आइडिया ऑफ इंडिया फॉरवर्ड, रीच टू द लास्ट माइल. That's the idea I want to take forward, and let's see what happens in 2024. I wish all my friends all the very best. Thank you very much. Thank you, Poonam. I had a feeling that 1 against 3 would not be an unequal fight because you were more than capable, and I was right. Congratulations. Okay, so now I ask questions. Shall we do this in the order in which they spoke? Priyanka Chaturvedi. The BJP's attack is that when you talk about the opposition, you talk about opposition unity. None of you people can really get along. And it gets a little more pointed. They say you people can't even get along in your own party. Right under the nose of your leader, the chief minister, the majority of his MLAs went through the back door and he had no idea. So, I mean, how will you unite when you can't even manage your own party? No, 8 years ago, nobody had the idea that a lot of promises were being made with regards to employment, with regards to zero corruption, with regards to doubling of farmer income, with regards to youth getting jobs, that they would see a phase where you are seeing unemployment at its highest. When you're seeing corruption in terms of crony capitalism, she was saying there's no Jijaji, no Dadaji, no Babaji, Bhabiji, Mamiji, whatever. Now you have Adaniji. So there is corruption. So what, 8 years ago, we were promised stronger institutions. 8 years ago, we were promised that Enforcement Directorate will do its job, Income Tax will do its job, CBI won't be a caged parrot anymore. What are we seeing now? CBI is not a caged parrot. It's a comatose parrot. It's on its deathbed. And we're all wanting to revive it. The opposition is talking about revival. Opposition is talking about the promises that they had made, and they have kept these unkept promises. And we have to talk about them. So now coming to my party. Yes, we have seen an exodus of people who have left us. Why did they leave us? Now let's go to the extended department of Bharatiya Janata Party, which was put to work to gun after the opposition. Everybody was shown their files, and what happened to, let's say, the Pratap Sarnayaks and Eknath Shindes whose files were open? What happened to that? What's the movement? And the very same ED has now got a stamp of approval, taking away 40 MLAs and for making a government fall. You're seeing the entirely compromised institution being wheeled in to give it a stamp of approval. And this is not about Shiv Sena anymore. This can happen to Aam Aadmi Party tomorrow, it can happen to BRS tomorrow, it can happen to any other party tomorrow. I would say if this is going to be the model of how ECI should work, everyone who's interested in contesting an election should not come from any political party. Just allot them a symbol, and they can be auctioned at a political party's behest, and whoever has the highest amount of money to bid for these MLAs, give it to them. Let's not have the concept of political parties. What is the 10th schedule for if you're going to be misreading the 10th schedule? So those are all, debates that we can have on constitutional morality and democratic principles. It's happened to us today. It could happen to any other party tomorrow if Bharatiya Janata Party continues its agenda of making them all a part of the electioneering process. They are the election toolkit for the BJP, and that is the unfortunate part. And it is not the Shiv Sena or political parties being harmed. It is our idea of India which is being harmed, it is our democracy which is being harmed, and it is our constitution which is getting compromised. That is all I'd like to say here. Strong stuff. Raghav, she's talked about the BJP targeting the opposition, using corruption cases. You've seen something like that in Delhi with the liquor scam. There's talk that Manish Sisodia may be arrested. Your leader, in fact, said yesterday that he'd heard rumors to that effect. Do you agree that the BJP, rather than fighting you guys on the electoral battlefield alone or on a political battlefield, is now relying on framing you guys? You have to be a coward to use agencies and state instrumentalities to attack your political opponents. I would say that BJP will be well advised to attack opposition parties, and particularly my political party, in the electoral battlefield by contesting an election against us. But if they choose to unleash the instruments of the state on my party and my party colleagues, it only goes to show that how frightened the BJP is, that mandates are being given to
the Enforcement Directorate, the CBI, the income tax, so on and so forth, to just find, and if not find, fabricate evidence against the Aam Aadmi Party and put leaders in jail. But permit me to, say this, that Aam Aadmi Party and leaders of the Aam Aadmi Party are not scared of these agencies or going to jail. We are fighting for the country. This is a political party that was born on the streets of this country, fighting a corrupt regime and a change in the dispensation. So therefore, we are all fighters, we're born fighters, and we're willing to take on these state instruments. However, I think the issues today that matter to the people of India are not just how the opposition will get together or whether instruments of the state like ED, CBI, etc. have been unleashed. I think the issues that matter to the common man that is sitting in this room or watching this show on their television screens are issues of unemployment, which is at a 45-year high under the leadership of Prime Minister Modi and the BJP. Issues of inflation that have touched a 30-year high, a 3-decadal high under the leadership of Prime Minister Modi and the BJP. The issue of devaluation of rupee, where rupee has today crossed 80 in front of the dollar. The issues of how corporate India is being benefited by giving them tax waivers and loan write-offs, but in turn, neither jobs are being created, nor the goods and commodities are becoming cheaper, nor private investment is coming. And above all, the colleague from the BJP mentioned about startups and unicorns in her opening remarks. I would like to ask her, does she know that less than 10% of India's startups today see their 5th anniversary? This is the plight of Startup India today, which the BJP tom-toms at the national stage. These are the core issues that must be discussed at a panel like this. And permit me to, in conclusion, say this, that the BJP, when it came in power in 2014 and throughout their journey up till 2022, kept on saying, we will deliver in the year 2022, wait for 2022. What will we do in 2022? One, we will double the farmers' income. Has the income of farmers doubled? The Standing Committee on Agriculture in Parliament says that the income levels of Indian farmers has reduced by a whopping 30% in more than 4 states in India. Number 2, they said that bullet trains will start plying on rail tracks come 2022. How many bullet trains have you, Veerji, traveled since the year 2022? Third, they said every Indian and every Indian family in this country will get a house, a pakka makan. How many Indians have got a pakka houses? Have all Indians got pakka houses? They went on to say that India will become a 5 trillion economy by the year 2022. As a chartered accountant and as a student of economics, permit me to say that at the current growth rate, it will take 7 more years for India to become a 5 trillion economy. These were the promises that were made, and today, when you stand up to the BJP and ask them, what about your promises of 2022? They say, wait for 2047 when India will complete 100 years of independence. That is when we'll deliver. Today, we are living in the day and age of Amrit Kal, so therefore you can't ask us questions. I think these are at the heart of every Indian and every Indian household. Unemployment, price rise, corruption, waivers to corporates, joblessness, the depreciation of the Indian rupee. These are the issues. And of course, the plight of the Indian farmer, where the NCRB data says that more than 30 farmers in India commit suicide on a daily basis, and the debt of an Indian farmer has increased by a whopping 54% under the BJP's administration since the year 2014. These are the core issues that are at the heart of every Indian today, and that must be answered at a panel like this, Mr. Tan. Thank you, Raghav. Your turn. The Prime Minister has said, and I think many people probably agree, that the BJP, whatever its faults, is different from many other political parties in India, which he says are, and I quote, family parties. And he says they're beset by corruption scandals, and what he's offering is an alternative to those family parties and to that corruption.
I think you're probably one of the parties he has in mind. So how do you respond? First of all, as an extension to what Raghav and Priyanka was saying, I would like to say, British government's policy was divide and rule. Today, BJP and Modi government's rule is raid and rule. So wherever you have to go, rule from the back doors, you raid, you divide that party and you rule. That is the policy right now of the BJP government. Second, when Mr. Modi very clearly said, na khaunga, na kane dunga, parivarvad, nepotism, corruption, what is he doing in the case of Mr. Adani? अदानी जी आपके एक्सटेंडेड परिवार से है, आपके दोस्त है, क्या प्रॉब्लम है? एक महीने के पीछे, just in January 25th to today February 25th, a company, Indian listed company, loses 12 lakh crores. LIC loses 80,000 crores. And Honorable Prime Minister is saying nothing. We ask for a joint parliamentary committee, we fight in the parliament, he says nothing. And if Mr. Modi is clean, he should at least now come out and say, put up a parliamentary committee. If you yourself are not clean, Mr. Modi, how are you even accusing the rest of the parties for being corrupt? That's a simple question. If you're not shielding Mr. Adani, why don't you just do the probe? They are doing a probe on me, they are doing a probe on 100 other people from the opposition parties. Why is Mr. Adani not being probed? Why is ED, SEBI, etc. not proactive in probing Mr. Adani? That is a simple question today. That in turn proves that Mr. Modi and BJP is not as clean as they say they are. That is precisely why we believe they will be voted out for this time. Two, and since this is a majorly women-dominated panel, I would like to request my dear friend Poonam, that Poonam, it's been 10 years, women reservation bill is pending. That was one of the poll promises in 2014 and also 2019 of Bharatiya Janata Party. Narendra Modi ji has said, we will pass the women reservation bill, जो अभी तक नहीं आया है. We have one more session to go. I earnestly request Honorable Prime Minister and my very dear friend Poonam ji to get it passed, so women political representation in all the houses will be more. Two, from the time in 1830s, when Indian census has started, not even during the world wars, World War I, World War II, census never stopped. But in Modi regime, from 2014 to 2022, no census of India. We don't know how many people are there in India now. My demand today is census should happen immediately and OBC census should definitely happen immediately. Otherwise, we cannot rule this country, we cannot allocate funds in a proper manner. This is our second demand. So we can go on and on and on about what Mr. Modi has not done and why he should be doing it, just by blaming the regional parties, saying you are from a parivar. My parivar, my entire parivar was on streets fighting for the state of Telangana. We came into politics, we came into people when we did not even have an idea that a state would be formed and then we will come to power, then you become MLA, MP. No, nothing. We were just fighting on the streets, rubbing shoulder to shoulder with any common man in Telangana today, and we automatically translated into a political party and became into power. So all parivars are not same. All parivars, if Modi ji wants to say parivarvad, no. We are in a parivar where we are facing very clearly and very boldly the agencies. Why isn't your parivar member, Mr. Adani, facing the agencies? That is a simple question. Okay, Poonam, let me just, they've said so many things. Let me summarize the main points of attack. One, I think it came from Priyanka, is that she believes in a kind of India that is no longer in existence. The other, and that's, I think, a point that's been made by everybody, is that you're not really content fighting elections. You get your opponents framed, you have them raided, you keep telling people they're crooks. Every time there's any chance of any opposition coming up to you, the ED is dispatched faithfully to raid them and to malign them. That's, I think, allegation 2. Allegation 3 is, yes, there's big talk about what you've achieved, but as my speaker after speaker has said, and Raghav particularly, those points are not accurate. This is all hype. This is a jumla. You haven't actually done anything for the economy. The promises have not been kept. You can take as long as you want because there are big charges. No, I won't take too much. I should have
I didn't know this kind of show is happening. I would have gotten my pen and paper also to write all the questions down. But I'm very happy to answer as many as I can do. First of all, Priyanka ji has placed a very rightly said she wants the idea of India. I think the idea of India, in my speech also I said that every Indian gets his due, what is promised directly. And that's what idea of India is. When she was talking about 10th schedule, party, infighting, ye, wo, fala, dhimka, I think some of the matters are sub judice. It's better I do not speak on it because I'm not a lawyer. And as I'm not a CA, but I can give some answers to that also, as being a little senior colleague in Parliament. But very importantly, what is happening with these state parties? I heard a word tom-tom. I'm creating a tom-tom. BJP is doing it. Of course, I am BJP and BJP is me. But it's not about creating a tom-tom. It's just telling people what we have done. Now, all my dear friends sitting here are telling about idea of India, spoke about how BJP is wrong and this mighty BJP has to be defeated. एक ने अपने स्टेट में क्या अच्छा काम हो रहा है वो अब तक नहीं बताया कि हमने किया तो आप ये करके दिखाओ. You think about it, I mean, it's not like I'm putting some allegation on you, but at least you should have said, Poonam, I have done certain things in Delhi. Why didn't you do this in Delhi, in other states? If Maharashtra has done 2.5 years when Uddhav ji's Sena was working, you have done so much, but I'm just trying, I'm not here having any problem with that. But you should have actually come up with an idea what you have done and what you have not done. But it is all about, I don't like to use such words, but let's now grow up and not to be crybabies of questioning a party who's elected by people of India. Everybody sitting here is voted by people, their party, her party, my party, Kavita ji's party. So let's get into a more positive debate that this is what we want as idea of India. That's point number one. Now what has happened in Shiv Sena is what Election Commission has done. We have seen a lot of discussions going on, but always questioning every state of agencies. I think somewhere then you can fight it on the street, you can fight it more logically on it, is what the expectation I will have it. Third, someone is someone's extended family. I think on the Prime Minister's clear record, I think we should also think when we talk about Prime Minister on what level and how do we connect Prime Minister to certain people. And when the Congress leader who's done such a big Bharat Jodo all over India, I realized he was always in his speech, I was in the parliament using Adani, Adani, Adani. So I felt he had no idea what he was talking about. I don't know what he understands about financials. Actually, Gaurav ji can help him out. But in Marathi, Adani means, यहाँ पे राजीव जी बैठे हैं, अडानी मीन्स जो अनपढ़ है. तो जो आपको लड़ना है पढ़ के लड़िए और पॉइंट लेके आके लड़िए. This is what I wanted to say on this topic. Raghav ji said about Startup India and Stand Up India. I'm not even talking about scheme. I'm talking about giving a base to the startups. India is the only country where not 10%, 15 to 20% startups do see their 5th anniversary, and we do work on it. These other numbers have been placed all over the world. That's why I'm trying to tell you. I'm just throwing numbers at it. Third, what you were asking about idea of India? No, I think you've handled that. That was Priyanka's first question. Respectfully, You're okay yes. But the question you haven't handled is that these are all jumlas, that the actual statistics don't live up to these promises. Sir, I am not even coming with Punjab, Maharashtra 2.5 years jumla numbers. I'm not talking about what Delhi has done. I'm not talking about my friend Telangana has done. Because all of us are, again, elected by people of this country. Again, I'm saying, when we talk about a certain kind of positive politics, I also want to hear what you have done and what you expect a particular party to do. That's what I'm trying to take this discourse and narrative of India towards that corner. And any other ways, if I want to talk about women reservation bill, I think I also support that, Kavita ji. We have 3.5 sessions still left, and I would like to take that idea forward and put it forward, that women's reservation bill. And in coming time, of course, with the new parliament, will we have more representation for parliamentarians, which is required for this 140 crore population of India. And I think we will be very positive on that. This is what I want to take it forward. All right, I have all the Raghav, at the end of a time, I let you rebut. I have to let everybody else rebut because everybody else, I think, wants to rebut it. But I actually
enjoyed the debate because we had what? Outstanding parliamentarians speaking on issues, not resorting to personal abuse, not attacking each other, not interrupting. It's up to you to decide who convinced you or who didn't convince you. So let's do the same vote we did at the beginning. How many of you think the opposition has a chance? A little bit more? Some more, no? The number has increased. The number has increased, yes. How many of you think that this is all talk? At the end of the day, the election is a done deal for the BJP? Okay. Pretty much the same number as last time. So this is the debate. This bears no relation to reality. This is a very unrepresentative audience, what Mr. Deshmukh here would call a self-selecting sample. Mr. Sanghi, this is a very good representation of the vote share also, where roughly 37% are with BJP and 63 are with the That's one way of looking at it. I just forgot to get my party karyakartas because I did not believe in that idea of India for clapping. Because I know all of them from Mumbai who comes from, supports which ideology, and they are my very good friends. Very good friends. Okay, all right. I think we'll all agree. I think we all agree that this doesn't mean anything in terms of the national vote, but it does mean something in terms of the debate. If these people have been able to change some minds, then the debate has been a success. But I have to say that whatever views I had, when I heard Poonam speak, I was just so impressed by what a great job she did fighting 3 different people. Very much, I think, the speaker of the debate. Thank you very much. We're already 5 minutes over. Thank you so much, and thank you to all our participants. Thank you. Thank you very much indeed. Requesting you all to kindly remain on stage for just a minute as I invite on stage Indrajit Rai, Input Editor, ABP News, to kindly present a memento on behalf of the network and show our appreciation for all our guests. Ladies and gentlemen, this is certainly just a curtain raiser to what we can expect ahead of the 2024 elections. Really appreciate our guests joining us today. A big round of applause from Aam Aadmi Party's Raghav Chadha. Priyanka Chaturvedi, ladies and gentlemen. Thank you also to Poonam Mahajan for bravely taking on the opposition on the stage today. And thank you very much, Kavita ji, for your powerful words. एक बार जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर as we say goodbye to these wonderful panelists. What a lovely debate. Thank you, Mr. Sangvi, once again. Well, our final session of the day is just about to begin as well. Thank you very much. Thank you, Mr. Sangvi.
take a minute or two for the room to settle down before we begin a rather delicious last session. आप सभी से निवेदन है to kindly take to your seats. एक बार फिर आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी to kindly take your seats. Please do take your seats as we'd like to begin the next session. अपनी कुर्सी पर बैठ जाइए प्लीज, आपसे निवेदन है. We'd like to continue with the final session of the evening. Please take your seats. So जैसा मैं आपको कह रही थी, there is one power-packed session yet to come and it's a session that will get you in the mood for dinner. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस सेशन के लिए रुकें. But of course you know ladies and gentlemen कि ये जो 2 दिन रहे हैं Ideas of India Summit के, they have passed very very quickly. We've had a chance to learn from 60 thought leaders and have a better idea of not just the India of today but also the India of tomorrow. I'd now like to request on stage Avinash Pandey to address us with a vote of thanks, after which we have a beautiful session lined up for you with some delicious looking dishes as well, which will get you ready for dinner. पर पहले स्वागत करना चाहूंगी अविनाश जी का for the vote of thanks. Please join us on stage, Mr. Pandey. Well, you know, at this point of time in the evening, and particularly when you are about to listen to Vikas Khanna, the only thing one should do is to shut up, right? But you know, what a 2 day, those of you who are attending for last 2 days, show me your hand if you enjoyed the evening. Last 2 days. So, what we did, what an amazing 2 days, calculated chaos, creating characters, not IAS officers. The violent do most violence to themselves. Who is a citizen, a refugee, an exile, or a migrant? Who is an Indian? What is the historical perspective to climate change? Telling original stories. Ladies and gentlemen, we have had 2 amazing days of listening to disruptions, innovators, movie makers, politicians, visionaries, and digital creators. We have had many ideas of India and ideas of India. My mind is full and my heart is overflowing. I thank you all for being with me on this amazing journey where we have traveled many eras, many time zones, and many lives. When we began Ideas of India last year, frankly, I had no idea that it would be such an adventure. We are so glad that we took a plunge. And thank you, the team on my right, who has actually put this together. And they work, I can tell you, 6 to 8 months in advance before the next event. I want to thank all our sponsors who believed in us, and they came overwhelmingly this year. All our supporters, the team behind it, the Ideas of India, and all of you who watched and listened to us. I hope we made you laugh, cry, think, and feel. See you again next year, same time. I promise you it will be even bigger and better. Thank you. Thank you so much, Mr. Pandey. Of course, this has become a
flagship summit now, and this is going to be an annual calendar event that we will all look forward to. And so, ladies and gentlemen, it's time for the final session of Ideas of India 2023, and it couldn't end on a more delicious note. हम पिछले 2 दिन से बात कर रहे हैं कि भारत किस तरह से साथ में जुड़ रहा है, and you know how people are connecting, and the one thing that connects all of us besides our sport and our movies is our food. हमारे जो अगले मेहमान हैं उन्होंने भारतीय खाने को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया है. He's a culinary wizard who has an infectious passion for food. He has worked very, very hard, incredibly hard, to be recognized as a top global chef. He is also a prolific author, filmmaker, and very importantly, he is a humanitarian. He manages to do all of this with a very charming smile as well. So please put your hands together for the dashing, and if I may say so, yummy Vikas Khanna. Please welcome him on stage. और उनके साथ स्वागत करना चाहूंगी चेतन भगत का. Good evening, welcome. वैसे खाने का टाइम हो गया पर मेरे पास खाना बनाने वाला है. विकास, वेलकम, थैंक यू फॉर डूइंग दिस. सुना मास्टर शेफ का फाइनल शूट करके आ रहे हो? जी, मास्टर शेफ का फाइनल चल रहा है. हाँ, चल रहा है. अच्छा, मैंने देखा, मैं आप पे थोड़ी रिसर्च कर रहा था, मैं हैरान हो गया क्योंकि मैंने कभी किसी शेफ का ऐसे नहीं देखा. पीपल मैगजीन की एक वर्ल्ड सेक्सिएस्ट मैन अलाइव आते हैं, नॉट सेक्सिएस्ट कुक्स अलाइव, ऐसी कोई लिस्ट नहीं होती. सेक्सिएस्ट मैन अलाइव में आप थे. मैं मैन हूं, मैं अलाइव हूं, पर सेक्सिएस्ट में नहीं आया. मतलब ये क्या हो रहा है? मतलब खाना बनाता हुआ आदमी इतना सेक्सी. It just came as something very different to us at that time. I think it was also Chef Gordon Ramsay. I was on his show, and he kept saying, you know, that how come you are like this? You know, it's like itna patla, itna. So like, you know, he was complimenting. So I think that has an infectious effect on people. I don't know what it was. मैं ही बना रहा हूँ, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा. It was a unique combination of things, I feel, because Indian food was at the cusp of being recognized as a mainstream cuisine in the US in so many ways, and I feel that they were looking for inclusivity. I feel इंडियन फूड पसंद है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि शेफ को सेक्सिएस्ट मैन अलाइव बोल दिया. पर वो तो आप हो गए. नहीं, I mean, I was going through your story. ये तो खैर बहुत बाद में हुआ है, और आपकी मैं बहुत लोग आपको जानते हैं, शायद लोग आपकी बैकग्राउंड नहीं जानते आपका, विच मेक्स योर जर्नी एंड मेक्स योर अचीवमेंट्स और भी ज़्यादा इनक्रेडिबल. तो आई वॉन्ट टू स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट योर चाइल्डहुड. आपका बचपन अमृतसर, जिसे अमृतसर बोला जाता है. अमृतसर, हाँ. तो वहाँ क्या था, कैसा था? वॉज इट लाइक, वर यू बॉर्न इन अ रिच फैमिली, पुअर फैमिली? व्हाट वॉज इट लाइक? कैसे पहली कुकिंग शुरू की, पहली नौकरी क्या थी? ज़रा थोड़ा लोगों को बताइए जिनको नहीं पता. पता है, जब हम ग्रो कर रहे थे सभी पुअर थे. अच्छा, राइट? किसी के बड़े घर थे पर सब पुअर ही थे. आई लाइक देयर वाज अ वेरी डिफरेंट इकोनॉमी एट दैट टाइम. आई एम टॉकिंग अबाउट 1970s. ग्रोइंग अप देयर वाज अ वेरी डिफरेंट सेंस ऑफ कि किसी ने कलर टीवी लिया तो सारी दुनिया के दुनिया उनके घर जाके बैठ बस ही गई. लाइक यू नो, वी कम फ्रॉम दैट कल्चर. अभी तो इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट टू टॉक अबाउट दोज थिंग्स बिकॉज India has everything in abundance, but what we've lost, what we've bargained, is something totally different. We've bargained for nuclear loneliness. That's what I call. And my heritage comes from that richness of, even if you were not rich, there was so much of love at home. खाना पूरा हो के ना हो, प्यार बहुत था. कौन कौन था? दादी थे, दादाजी थे, मम्मा पापा, मेरी छोटी बहन जो मेरी बेटी की तरह थी, and my father and my brother, elder brother. And your nani was there? नानी was, of course, जैसे होता टिपिकल नानी का घर डिफरेंट है, पर मेरे को दादी ने सिखाया खाना. एंड देन आई स्टार्टेड वेरी अर्ली एट 16 बिकॉज आई कुडंट स्टडी. प्रॉब्लम थी, मेरी मेंटल प्रॉब्लम थी कि मैं पढ़ नहीं सकता था. आई कुडंट हैव अटेंशन फॉर एनीथिंग. तो फिर सब ने कहा चलो खाना बनाना चाहता है बना ले, इसका तो कुछ होना नहीं है. तो वो भी होता है ना फैमिली में, आपके साथ नहीं होगा ना, पढ़े लिखे बच्चे हो आप. बट आई फील दैट देयर वाज अ वेरी डिफरेंट एनर्जी एट दैट टाइम ग्रोइंग अप इन इंडिया.
तो 16 साल में आपको कहा कि चल खाना बना सकते, क्या क्या डिशेस थी? तो आई वॉज वेरी गुड इन तंदूर, विच इज़ वेरी रेयर थिंग। तंदूर बहुत अच्छा था मेरा, क्योंकि जो अमृतसर के जो हैं उनको पता है कि मकबूल रोड पे तंदूर का एक दुकान है। दे यूज टू थिंक आई एम क्रेजी, राइट? बच्चा था बिल्कुल पतला सा, हड्डियाँ, एंड आई यूज टू पुट तंदूर वेरी वेल। एंड फिर लोग मुझे पार्टियों में बुलाते थे, तो बीजी बड़ा इंकरेज करते थे, क्या बात है, गोल्ड रोटी बनाता है तो हीरो है। मतलब दैट वाज माय पैरामीटर, एंड आई फील दैट गोल्डन टेम्पल रियली हेल्प मी अंडरस्टैंड फूड ऑन अ मच डिफरेंट स्केल एंड मैग्नीट्यूड। आई यूज टू फील कि सिर्फ दुनिया में एक कला है जिसमें सब अमीर गरीब सामने बैठते हैं, सबको झुकना पड़ता है माँ अन्नपूर्णा के सामने। एंड आई फेल्ट दैट इज समथिंग इन माई चाइल्डहुड, इट हैड अ वेरी डीप इम्पैक्ट। And one of your first, you did many छोटे jobs, but one of your first businesses was the kitty party business. Yeah. So talk about that. क्या था, क्या concept था, क्या खोला, कैसे था? घर के पीछे ही था किटी पार्टी हॉल। जैसे घर के होता है, घर है तो पीछे गार्डन नहीं है, तो उसमें दीवार तोड़ के बना दिया। तो पापा ने कहा ठीक है, तो इसमें किटी पार्टी हाउस बना दे, बट यू नीड कैपिटल टू स्टार्ट दैट, राइट? सो 12,000 रुपये पापा ने कहा खर्चा चाहिए, कुर्सी हैं, टेबलें, तंदूर और किचन का थोड़ा बहुत बर्तन पतीले वगैरह। तो वी डिड नॉट नो व्हाट टू डू, यू नो, आई विल बी ऑनेस्ट। एंड फिर आई यूज्ड टू, मेरी दादी और मैं और मम्मा, वी यूज्ड टू गिव, जो स्कूल में छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए खाना लेके जाते थे हम लोग। तो वहाँ पे प्रिंसिपल से बात की, तो मैं भी बड़ा, आई वॉज ऑलवेज वेरी ओवर टॉकेटिव। तो प्रिंसिपल ने कहा कि हमको स्वेटर चाहिए सर्दियों के लिए। तो मैंने कहा हम बना सकते हैं। आई लर्न हाउ टू नेट, आई मेड 700 स्वेटर्स लाइक पर्सनली 16 ईयर्स अगो। अब मुझे कोई शर्म नहीं है, लोग कहते हैं ये क्या काम था। मैं कहा हिम्मत से कमाए पैसे, तभी उनकी जाग लगी। आई डोंट नो जाग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या, जो भी बोलते हैं, जाग होती है, मतलब दही जाग के बिना नहीं जमता। तो माई ग्रैंड मदर सेज ये पैसा नहीं है, जाग आई है घर में। सो आई होप ये बरकत हमेशा रहे। सो आई मेड 12,000 रुपीज़ व्हेन आई वाज 16 टू ओपन दैट बैंक्वेट विद माई मॉम, एंड आई डिड टेरेबली बैड इन बिजनेस। कैसे? वाई बैड? व्हाट हैपेंड? बीजी कहते थे खाने के पैसे लेने नहीं चाहिए, जो आए हैं घर में। बीजी को लगता था घर ही है ये हमारा। बीजी मीन्स नानी, दादी। नो। तो बीजी को लगता था कि हमारा घर ही है, इन पैसे पागल है, पैसे ले रहे हैं। तो मैं कहता था ठीक है, नहीं लेता। तो लाइक यू नो, इट वाज लाइक पापा यूज्ड टू से इट शुड बी कॉल्ड लॉरेंस गार्डन फाउंडेशन और चैरिटी, क्योंकि यहाँ पे कोई पैसे देके नहीं जाता आप दोनों को। अब बड़े खुश होती है जब पार्टी आती है। सो आई थिंक दैट बिकेम, पीपल फील दैट वाज लाइक। क्या बनाते थे आप? 6 चीज़ें। 6 चीज़ें, भटूरे छोले, पनीर पकौड़ा, स्प्रिंग रोल, मंचूरियन जैसे होता है, और साथ में कुलचे, और साथ में जो मीठे खट्टे छोले होते हैं, वो उसके आलू होते हैं, वो। आई डिडंट नो हाउ टू मेक एनीथिंग एल्स। मुझे भी आज तक यही चीज़ें बेस्ट लगती है। वैसे ये बेस्ट टॉप हिट्स हैं ये, मे बी फॉर पंजाबीज। एक्चुअली आपने कभी सोचा पंजाबी फूड इतना इंडिया में कैसे पॉपुलर है? आई एम ऑल्सो पंजाबी बाय द वे, सो अलाउ मी दिस मोमेंट। बट बाकी भी हमारे स्टेट्स की कुजीन है, पंजाबी खाना आपको हर जगह बहुत चलता है। इंटरनेशनली के इंडिया में? इंडिया में तो डेफिनेटली, इंटरनेशनल भी आपने चला दिया। बिकॉज पहले इमिग्रेंट्स जो थे बाहर जाने वाले, वो लॉट ऑफ पंजाबीज वेंट आउट टू यूके। तो यूके में क्या हुआ कि टैक्सी चलाई, काम किया, फिर रेस्टोरेंट खोल लिया। वही दाल मखनी, पनीर, पालक पनीर, चिकन टिक्का मसाला, तंदूरी चिकन, चिकन टिक्का, नान, रोटी, गार्लिक नान, खीर, गुलाब जामुन, रसमलाई, वही मेन्यू है स्टैंडर्ड। सो मुझे भूख लग रही है, आप बोल रहे हो ना। एनीवे, हाँ, ये सारे कह रहे हैं बस करते खाने का बताना। बट इट वॉज अ फैक्ट दैट आई हैड लर्नड अ फ्यू डिशेज। These 6 dishes, ये 6 डिशेज आप रोज बनाते थे। किटी पार्टी, लॉरेंस गार्डन नाम में लोग आते थे, वो वेन्यू हायर कर सकते थे। 10 रुपए के खाती थी आंटी अनलिमिटेड भटूरे छोले। एंड इफ यू हैव पंजाबी रिलेटिव्स, यू नो दे कैन रियली ईट। और होता था उसमें लिमिटेड। पापा कहते लिमिट लगा दो, तो आंटी कहते नहीं लिमिट नहीं, इसलिए जब बुक करने आते थे कहा था जितना मर्जी खाना। तो डंडे पड़ते थे मेरे को पापा से कि क्या कर रहा है ये बिजनेस। बट आंटी कितने भटूरे खा जाते थे? सच बोल सकता हूँ? हाँ, तो मतलब आंटियाँ क्या करती थी, खाती 7-8 थी, 6-7 खा लेती थी, और लिफाफे लेके आती थी, पैक करा के ले आती थी, और फिर बोलती थी मेरी बेटी जो है तो बच्चा है, इसके पैसे मत ले। मैं क्या आंटी 10 साल में इतनी बड़ी हो गई है, कुछ तो दो इसके पैसे। आई यूज्ड टू बार्गेन लाइक दैट, लाइक यू नो, नजर ना लगा हमारे बच्चों को, बच्चे बड़े हो गए, खाने पीने दे उनको, तेरा क्या जाता है। एंड आई यूज्ड टू से ओके, क्या जाता है। सो दैट 10 रुपी पर पर्सन अनलिमिटेड भटूरे छोले, आई कैन गेस इट्स नॉट वायबल। It was viable.
because I got my college admission because of that. अच्छा कैसे, हाँ वो भी, पर यू फर्स्ट गॉट रिजेक्टेड विच कॉलेज, एंड उन्होंने पहले आपको कहा कि नहीं यार अंग्रेजी नहीं बोलता कुछ ऐसा, व्हाट? तो जब आप, आई डोंट नो इफ यू नो दिस दैट छोटे शहर के बच्चों के ना एक बड़ी, देयर इज अ वेरी स्ट्रांग वल्नरेबिलिटी, एक फ्रेजिलिटी होती है उनकी, वो समझते नहीं है लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, एक्सेंट का मेरा हो, अच्छा फिर क्या क्या बनाता है। तो